So give a quick recap till people start joining and get ready. So we started to study the topic of refraction, and refraction means bending of light, right? It's bending of light, and as it travels from one medium to another, right? This was the basic definition. Then we understood why does this bending of light take place? This is due to difference, okay, difference in speed of light in two mediums. Two different mediums will have two different speed of light, okay? Difference in speed of light in two mediums. And when you talk about the two mediums, what we would be more interested would be the interface of the two mediums. The interface. And it is here where the bending happens. Here where the bending happens, right? This is what we had learned. And the two mediums then get classified. The two mediums then get classified into two different names. Okay. It's one will be known as rarer and one would be known as denser. Rarer is a medium where light travels fast. Light travels fast means less of obstruction. Denser where light travels slow. इतना हमने उस दिन को पढ़ा था, ठीक है? Now, in order to understand another, and the diagram recaps also, we'll take a quick recap of the diagram. So the first diagram is all about light and light traveling from rarer to denser medium. Okay, light traveling from rarer to denser medium. So rarer medium is air, a denser medium is glass, and this is the interface. So how does the diagram look like? The diagram will look like light is incident on this surface, right? At the point of incidence, I will be always making the normal. Okay, I always make the normal. साहब ये रिवीजन है, इस रिवीजन को भी अगर आप लिखेंगे ना तो भी आपका लर्निंग इंप्रूव होगा, कोई टेंशन नहीं. मुझे क्या जरूरत है दोबारा इसको बनाने के लिए? So when you go to glass, you'll be bending towards the normal. Okay, you bend towards the normal. Angle made by the incident ray with the normal is known as angle of incidence. This is angle of incidence. And angle made by the refracted ray with the normal, this is R, which is known as refraction. Angle of refraction. Right? This is known as the angle of refraction. Okay. Angle of refraction. And in this case, we will always find that I will be greater than R because the light is moving from rarer to denser. The second option was when light moves from denser to rarer. Denser to rarer. Let's see about this option. Denser to rarer होने से कैसा रहता है? So let's make our interface first. All right, let me make my interface. This is the interface. Now you're going from denser to rarer. So what can be denser? Again, let's take glass out here and let's take air out here. Denser to rarer. So this is my incident ray. This is normal at the point of incidence. Normal at the point of incidence. Now you're going from denser to rarer. So your speed increases. So you don't need any more support. So you will bend away from the normal. So you will bend away from normal and you'll be going in this direction like this. So let me plot my I and let me plot my R. In this case, I will be less than R. Here, speed is less. Here, speed is more. Okay. Here, speed is more, and here, speed is less. This scenario is known as bends towards normal. Bends towards normal.
not bends, it should be bend towards normal. And this scenario is known as bends away from normal. Okay, this should be clear with you. Wherever the speed is more, it's known as a rarer medium. आप खुला खुला भाग सकते हैं. Wherever the speed is less, it is known as denser medium. Denser medium में आपका भागना possible नहीं, आप फंस जाएंगे. And we also saw a third option that light travels perpendicular to point of incidence. Point of incidence. So in that case, the light will go, you'll find no deviation. No deviation. Such a scenario, angle I will be equal to angle R, and both will be equal to 90 degrees. What are you trying to say, sir? What I'm trying to say is, this is my interface. This is my interface. And I have got two different mediums. This is medium 1. And this is medium 2. This is medium 2. My light ray will travel straight directly inside. Straight away goes inside. No deviation. And if you want to draw the normal also, you can draw the normal. The normal will always be aligned with this. The normal is also aligned with this. So where is the point of incidence? The point of incidence is here. And where is the incident ray? The incident ray is out here. ठीक है, ये तीन हम देख चुके हैं. This is just a quick recap of whatever we had studied in our previous class. So after that, we combined all drawings and we said that this time light is going to travel from rarer to denser and again to rarer, where I'll call this as medium 1, this is medium 2, and this is again medium 1, which means these two are same medium. These two will be same. Let's try to do that. This actually comes as an experiment to you, maybe in grade, we had it in grade 9, I think grade 9. Yeah, grade 9 we used to have it. You take a glass slab like this. This is a glass slab. So I can write here as medium 2, medium 1, and this is again medium 1. Same medium. All right, let's take a ray of light. So find ray of light comes in this way. You can make it in any way that you want. Comes in this way. Which is my angle of incidence? This is my angle of incidence. Sorry, point of incidence. This is my point of incidence. Draw the normal at the point of incidence. So the normal at the point of incidence would be like this. After that, we need to make our refracted ray, the first refracted ray. So let's make it through this. The first refracted ray will bend towards the normal. This. Where is the point of incidence? The point of incidence is now here. A little bit smaller. And now make the next normal at this surface. Next normal. Right? So this is my angle of incidence. This is my angle of incidence. I call it as I. And this is my angle of refraction R. Okay, R1. This is I1. R1 is again equal to I2 or alternate interior angles of parallel line. Right? This is the incident angle. And finally, my ray will come out, and my ray will come out exactly parallel to the incident ray. Yeah. And this will be, this will be known as angle of emergence, because finally it is emerging out. Angle of emergence. What would have been the actual path of the light ray? If it had undergone no deviation, the actual path of the light ray would have been in this manner. This. So we say that light ray shifted. So this measurement is known as
lateral shift. Lateral shift. That's it. So in our diagram, M1 was assumed to be rarer. This was denser. And this is back to rarer. So optical density of medium 1 is same as medium 1. If the third medium was of a different optical intensity, there would have been slight deviation in the ray. You won't have got a parallel ray. आर्यमन फिगर उगर बना रहा है कि नहीं? अभी बना रहा है, नहीं बनाया इतना देर. Where is, why you scale pencil नहीं है? You are not making diagrams. You are now opening the book. Again, you will have a reason. I could have also not done this. This was done in last class, child. I could have started from where I stopped. In that case, I know you all are having holidays. You will not get, you must have not studied. Okay, it's just to bring you on page, because otherwise, if I start from where I stopped, it will be, anyways, it gets boring because you all don't talk. So it gets more boring because you will not understand from where I start teaching. नहीं सर, मेरे पास पेन पेंसिल नहीं था, तो बाद में सोचा कि नीचे ड्रॉ करूं. बाद में क्यों? आप फ्री हैंड ड्रॉ कीजिए ना, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए बेटा. If you involve in the class, you will like to participate in the class. हाथ से ड्रॉ कीजिए. आप see, I believe that you want to go for a technical education later on. Whether you want to go for medical or engineering, आपको drawing तो should come natural. आप हाथ से ड्रॉ करो ना. कौन आपको बोल रहा है स्केल प्रोटेक्टर से ड्रॉ करने के लिए? करोगे तो हम सीखेंगे, नहीं करेंगे तो हम नहीं सीखेंगे बेटा. ठीक है? Let's see some of the effects of refraction. And we start our class from today. That is effects of refraction. Like one of the most common effects, let's try to draw and again see. Let's suppose this is a water pool. Okay, this is a water pool. This is the water pool. Let's say this is a swimming pool. This is swimming pool. Right? And in this swimming pool, let's say we have dipped a stick. Okay, let's say we have dipped a stick here. Sorry. This is a stick in a swimming pool. Or in a water pool. Sorry, children. Right, this is a swimming pool stick. Now let us try to draw the angle of incidence and all. Let's make the angle of incidence from the tip of the stick. Right, let's make the stick a little bit pointed out here. Pointed. So karo, apne aap hi aa jayega. Let us make first the angle of incidence. So it is coming out from here like this. Fine. What is this? What is this medium? This is H2O. What is this medium? Sir, this is air. Where is the speed of light more? Sir, it's maximum in air. So definitely this has to be the denser medium. And this has to be the rarer medium, right? At the, where is the point of incidence? The point of incidence is exactly here. This can be also thought as the interface. Let me make it with red dotted color so that this line is making the, this is making the interface of the two medium. This is the interface of the two medium. Okay. Now, if you have the point of incidence, also make the normal. Let's make the normal. This is the normal. This is the normal. Now, what do you think? Light is traveling from denser to rarer. How will it bend? It will bend away from the normal. Anna, it will bend away from the normal. So let us bend, make it bend away from the normal. कैसे bend करेगा? ये ऐसे bend करेगा. ऐसे bend करके चला गया. ठीक उसी तरह we can have another one ray of light coming from here. This is another one ray of light. And try to make its normal also. Let's make its normal. इसका normal कुछ इस तरह से होएगा. गलत हो गया है. इसका normal कुछ इस तरह से होएगा. Right, fine. Because the point of incidence for this one was here. Now this ray also bends away from the normal.
Let us make it bend away from normal. So the ray bends out here, bends away from the normal. Right? And now what you do, now what you just extrapolate these two rays. Zyada bend ho gaya actually. So if you extrapolate this ray, and if you extrapolate this ray, right? These are the two rays you're trying to. So what happens actually to you is that you find, or it appears to you that the stick is actually bent. The stick is bent. This is the shape of the stick that you see. Stick got bent. And what is here? Sir, here is my lovely, beautiful eye. Right? This is our eye. So it appears to you that the stick is bent in water. Stick appears to be bent. This is due to refraction. Another important thing happens here. Okay, this is more interesting. See, let us assume that this is the bottom of the swimming pool. I'll combine one diagram for both. This is the bottom of the swimming pool. Okay, this is the rock bottom of the swimming pool. So let me write it. This is bottom. All right. So we should know what is the depth of this swimming pool. So the depth of the swimming pool is this much. This much is the depth. Depth. And I'll call it the actual depth. But since you are above, you find the depth at which level? You will find the depth at this level. This is the depth that you are sensing. ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा. आपको ऐसा एहसास दिलाता है कि ये स्विमिंग पूल ज्यादा डीप नहीं है. All of you must have felt it when you have gone to a swimming pool. So this is known as apparent depth. Apparent depth. So how much? So if actual depth is H1 and apparent depth is H2, you are actually illusion, or should I say, you hallucinate with a depth, a difference of depth which is equal to H1 minus H2. H2. अच्छा सर, हाँ, आपका वो कब तक खत्म होएगा स्टूडियो? टाइम है अभी, क्यों? मतलब कि कितना और टाइम एस्टिमेट है? मेरे आते आते तक लगेगा, ये मई लगेगा. जून से पहले नहीं करेंगे, उससे पहले ट्रायल क्लास करूंगा, सब देखूंगा, उसके बाद मूव ऑन करूंगा. सो 2 इज दैट डेप्थ ऑफ अ स्विमिंग पूल appears less than it actually is. This is also one of the effect of refraction. And same sense, this is analogous to if you drop a quick coin on the floor of the swimming pool. So you'll say object inside a pool appears to be raised. Object under water appears to be raised. This is also same takeaway from the same diagram. You can say swimming pool's depth appears to be less, so you immediately go and start putting your leg inside it, and then you have a fall. And one more thing which we will read later, stars twinkling. Stars twinkling is also due to atmospheric reflection. That we will learn later. Human eye and the beautiful world, in that chapter we'll learn. Atmospheric refraction. Because the atmosphere has a lot of layers, there are gases at different temperature. Isko aise samajh lo. What happens here is, star is far away from us.
and the atmosphere that we have has different layers. All layers are having different temperature. Once you have layers having different temperature, the problem that starts occurring is that you actually create what? You actually create rarer and denser medium amongst themselves. And so the rays of light which comes, they get bent. वो bent करके आते हैं और आपको twinkling दिखना नजर होता है. Because this continuously keep changing, right? The optical density is not fixed, keeps varying. ये vary करते रहता है. And if it's keep varying, the moment one ray of light came like this, the next moment the second ray of light may come. Second moment the ray of light may come. 1 minute, that's it. The ray of light may come in this manner. ऐसा के थोड़ा सा ऐसा गया. Third light, the ray of light may come like this because the medium is changing. Between you and the stars, the medium's optical density is continuously changing. That is known as atmospheric refraction. As a result, the stars appear to twinkle. Sir, so temperature of a medium will also affect if it's rarer or denser. Yeah, that is for gases. When gases are medium. However, air as a gas will have the highest, will support the highest velocity. Velocity of light is maximum in air and in vacuum, and the value is 3 into 10 to the power 8 meter per second. I think that also we had studied, so we can write that also. Okay. And this brings you to first section of the chapter's end, where you have after these questions which are related to these particular phenomena. Why does the swimming pool appear less in height? Why does an object which is kept in the floor of a swimming pool appear raised? Why does a pool appear to be less deep? Why does a stick appear bent? All these questions you get from here. समझ में आया इतना तक? ठीक है? So now it's time for us to understand laws of refraction. ठीक है? यहाँ तक कर लीजिए. If you want a little bit more to copy, take your time, copy down, and let me know once you are done. We can start with laws of refraction. Done. मोटा मोटी अभी आइडिया हो गया ना रिफ्रैक्शन क्या है. रिफ्रैक्शन is bending of light that is travels from one medium to other. If the two mediums have got different optical density, we will see bending rarer to denser, towards the normal, denser to rarer, away from the normal, blah blah blah. चलिए अब हम सीखते हैं laws of refraction. Let's go to laws of refraction. Okay, now you don't know trigonometry, but problem doesn't come with trigonometry oriented. So let's see laws of refraction. For that, again, we make our diagram, angle of incidence, then normal at the point of incidence, normal, where is normal? Normal is here. Normal at the point of incidence, and that will be here. And after that, we have angle of refraction. Let's make the angle of refraction. I made it like this because in my diagram, I have assumed that this is a rarer medium and this is a denser medium. Okay. This is AB, AO, or AM, whatever you can write. Let this be MB, let this be N, N dash, and let this be I, and let this be R, right? And let PQ be the interface. So we can write all the things, observations that we have. PQ is our interface between mediums. Fine. Then
What is AB? AB is my incident ray. Very good. And number 3, what is N dash? Normal at point of incidence. At point of incidence. What is MB? MB is my refracted ray. Okay, this much we have done. This is PQ. Number 5, what is I? I is angle of incidence. And number 6, R is angle of refraction. Any doubt in these terminologies so far? Because this is what we are going to encounter again and again and again and again. Okay. So let's come to our laws. The laws. The first law says, first law is same as the second law of reflection. The incident ray, the refracted ray and normal at point of incidence lie, or rather I should write incidence, and bracket I'll write, all lie on the same plane. Is this much clear? Right. The incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie at on the same plane. This is just like how we have studied for laws of reflection. It is the same type of law. Okay. The second one is interesting. Second one says ratio of sine of angle, S-I-N-E you can write, sine of, I'll explain everything to you, angle of incidence to sine of angle of refraction for a pair of media, media is plural, for a pair of media, or given for a pair of media is constant. Okay. Now sine will be something which will be haunting you as Greek or Latin. So just understand a little bit out here. If you have a right angle triangle, let's make a right angle triangle first. These are valid for only right angle triangles. This is right angle triangle. And let's take any arbitrary angle. Let's take this angle as theta. Okay. We'll learn this in trigonometry, but this is theta. This is our right angle triangle ABC. Okay. This is 90 degree. The side that is opposite to 90 degree is always known as the hypotenuse. Longest side, hypotenuse. And then the side that is, don't go with perpendicular and altitude. The side that is opposite to the angle that you are trying to measure. There is a side which is opposite to the angle under your consideration. So I will call this side as opposite side. And the leftover side will be known as adjacent side. Okay. First, identify a triangle. A triangle has got 3 sides. Sir, how do, but just look at here, children. If I change this as my angle and I call this as beta,
then my opposite side will be this. For the green angle, this will be my opposite side, and this will be adjacent side. The hypotenuse never changes because it is always opposite to 90. So adjacent and opposite changes according to the angle which we are studying. And after that, there is a simple formula to remember all these things. And that formula is so ka toa. Right now, we are only dealing this part. So Janvi must have learned in school. So means sine of the angle, that is the angle theta, should be equal to O means opposite side, H means hypotenuse. So what is sine equal to? Sine is equal to BC upon AC. And if I would have changed my diagram and I would have tried to look for sine of beta, then it would have been again opposite by adjacent, but this time it would have been AB by AC. Similarly, cos, C stands for cos. Ka means cos. Cos is adjacent by hypotenuse, and toa T means tan. This is cos, this is tan. It's a baad mein dekhenge. Understood? Fair bit of idea about what is sine. Given a right angle triangle has three sides: hypotenuse, opposite, and adjacent. How to identify these? Well, first of all, freeze your angle, the angle for which you want to measure sine. You want to measure sine of which angle? Sir, I want to measure sine of theta. Very good. If you want to measure sine of theta, then your opposite side will be the side right in front of you. Opposite side is the side right in front of you, and that's BC. And hypotenuse is already frozen. So you have only left with one side, and that side will automatically be your adjacent side. Adjacent means next to the angle. Adjacent means next to the angle. If you look at angle theta, then it has a side on its left and it has a side on its right. Right one is already frozen because that's the hypotenuse. So the only option you are left with is the left one. And that becomes the adjacent side. Samajh mein aaya? So our second law says that the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant for a given media. Now look at our diagram. Let's say we have a diagram like this is medium 1 and this is medium 2. Well, this is arbitrarily the medium 1 and medium 2. So we are trying to say that if you have a pair of media, that is medium 1 versus medium 2, in such a medium, if you are undergoing refraction, then sine of I over sine of R will always be a constant data. Irrespective of if you go on changing the angle of incidence, the angle of refraction also changes. And so will be the sine and the sine values of both. So the ratio of these two values will always be constant. Okay? Understood? Has it gone down your head or not? Right? And this law is also known as Snell's law. Snell's law. And the constant that you get, this constant has got a name, and the name of that constant is refractive index. This is known as refractive index. Now there's a small catch. There's a small catch. Okay. Now look at the catch. यहाँ अगर क्लियर हो गए 12th क्लास में पूरा क्लियर रहेगा. अभी जो बता रहा हूं बहुत इजी है पर बहुत कंफ्यूजिंग है. Right? Look at me. Look at me. Say for example, I am doing the same diagram with but two different mediums. I am using rarer and this side is denser. Okay? Similarly, this side is rarer and say this side is denser. Okay? On the first example, I am using air. And here I am using, say for example, I am using glass. समझ में आया? दूसरे वाले में रेयर की जगह पे मैंने यूज किया है केरोसिन. एंड डेंसर में मैंने किसको यूज किया है? वही ग्लास को यूज किया है. ठीक है? आइए आप सिर्फ देखो मैं क्या करता हूं. डायग्राम्स थोड़े देखते हैं. ठीक है? एयर से आ रहा है तो ग्लास की तरफ बेंड करेगा. ठीक है ना? ग्लास की तरफ मान लो ऐसे बेंड किया है. ठीक है?
और केरोसिन से जब आ रहा है, लेट्स से मैं कर लेता हूं लाइक दिस, एयर से आ रहा है, ग्लास की तरफ बेंड किया, केरोसिन से आ रहा है तो भी ग्लास की तरफ बेंड करेगा। बट एक फर्क है दोनों में एक फर्क आ जाएगा, दोनों की बेंडिंग अलग अलग होगी। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली speed of light in air and speed of light in kerosene are two different things. Now try and see. Air is a rarer medium as compared to glass, so as kerosene is a rarer medium as compared to glass. But between air and kerosene, air is more rarer, because what have we learned? Speed of light is maximum in air. Air से rarer कोई हो ही नहीं सकता है। तो अगर हम एयर और केरोसिन का डायग्राम करें तो क्या होगा बेटा, एयर से केरोसिन में जाएगा तो भी बेंडिंग होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? कैसे बताऊं? अगर नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो, देखो ये गरीब है, ये गरीब है, गरीब समझ लो, ये मैं हूं और ये अंबानी है। दोनों ही केस में अमीर गरीब हो रहा है, लेकिन यहाँ जो अमीर गरीबी का फर्क है ना, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि सर, इसका मतलब ये है कि सर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, मी एंड अंबानी, देन आई एम मोर गरीब ना एज कंपेयर टू दिस। हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस फेलो इज द मोस्ट रेयरेस्ट वन, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक आई होगा, यहाँ पे एक आर होगा, यहाँ पे आई तो नहीं बोलूंगा, कुछ आई डैश होगा और यहाँ पे कुछ आर डैश होगा। अब आप बोलोगे कि सर साइन आई बाई साइन आर इधर मिलेगा, ये कांस्टेंट होना चाहिए। होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा। इधर क्या क्या होगा, साइन आई डैश बाई साइन आर डैश, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल होगा। इसकी वैल्यू मान लो अगर सी है, इसकी वैल्यू सी डैश है, याद रखिएगा सी कभी भी सी डैश के बराबर नहीं होगा, क्योंकि रिश्तेदारी बराबर में नहीं हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो हमने लिखा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने तो लिख दिया कि दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ योर दिमाग विल आस्क यू, सर इसको भी आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका बुक कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको भी हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने से किसको मैं मानूं, व्हिच इज द करेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बेटा द बेंचमार्क इज ऑलवेज विथ एयर, एयर हमारा बेंचमार्क है। अगर एयर से लाइट घुस रहा है तो फिर आप दोनों मीडियम में किसको कंपेयर कर रहे हो? याद रखिएगा, यू आर कंपेयरिंग ग्लास with respect to air. Don't you think so? Air has the maximum velocity, so you are comparing glass with respect to air. ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब आप एयर के साथ कंपेयर करते हो, थोड़ा सा हटा के इसको थोड़ा सा इज्जत देके लिखना पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट है ये, ठीक है ना? और जब आप ऐसे देख रहे हो, ये हर पेयर के लिए अलग, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। नाउ यू विल हैव अ वैल्यू फॉर इट, लेट्स से द वैल्यू इज 1.3 फॉर एग्जांपल। say the absolute refractive index of glass is 1.3 because it is sin I by sin R, so it will be unitless, ये quantity unitless होगा, दोनों ही ऊपर नीचे सेम है। Now come to this side, सर इस साइड में क्या बोलूं? क्या मैं इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलूं या केरोसिन बोलूं? नहीं सर, केरोसिन तो बोल ही नहीं सकते। जो ऊपर है, जहां से लाइट आ रहा है, ऊपर है, उसको हमेशा रेस्पेक्ट दो, है ना? जो ऊपर बैठा है उसको रेस्पेक्ट दो। सो हियर आई विल कॉल refractive index of glass with respect to kerosene. Are you understanding? तो ऐसे इसका भी तो कोई एक डेटा आएगा, बिल्कुल आएगा। उसको क्या नाम देंगे सर? उसको भी एक अलग नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों में एक फर्क है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बिटवीन यू एंड मी हु इज द रिचेस्ट। सर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कीजिए, between you and Aryaman who is the richest? Again relative refractive index, but we are comparing with one, say Bill Gates, he is the benchmark, he is air, then we will say absolute refractive index, absolute garibi index, absolute richness index.
right? Are you understanding? So every time we find a data, now this is not yet complete. अभी just समझो, आपको absolute और relative का concept समझ में आया. Absolute word हम तब use करते हैं जब आपका basically refractive index compare किया गया है air से. अगर आपने absolute word सुन लिया तो ये सुन लेना कि light enters from air to medium, जो भी मीडियम है. आपको किसी ने बोला diffract, absolute refractive index means light enters. Now question comes is, when you Google, and you can Google this terms, you can Google say what is refractive index of, say for example, say glycerin. आप Google करोगे ना तो आपको ग्लिसरीन का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेटा मिल जाएगा. इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये जो डेटा है ये एक स्टैंडर्ड डेटा है जो आपको मिलता है ना? स्टैंडर्ड डेटा है. लाइक व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स अ स्टैंडर्ड डेटा. तो ये स्टैंडर्ड डेटा है, मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप गूगल करके निकाल रहे हो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो. अब आप पूछोगे सर गूगल ये वाला क्यों नहीं देता है? गूगल को क्या मालूम आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? ग्लिसरीन को ग्लास के साथ कंपेयर कर रहे हो, अल्कोहल के साथ कंपेयर कर रहे हो, एयर नहीं, एयर करते तो स्टैंडर्ड आ जाता. बिल गेट्स के साथ हमारी गरीबी कंपेयर करोगे तो स्टैंडर्ड गरीबी इंडेक्स मिल जाएगा, है ना? जस्ट लाइक पॉवर्टी लाइन कैसे आप प्लॉट करते हो? गवर्नमेंट ने एक चीज अर्निंग, एक मिनिमम अर्निंग गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है. अगर उस अर्निंग से नीचे हो गरीब हो, उस अर्निंग से ऊपर हो गरीब नहीं हो. लेकिन तुम्हें अगर मैं ले जाके बिल गेट्स के सामने रखूं तुम फिर से गरीब बन गए, है ना? सो दैट बेंचमार्क इज नोन एज एयर. whenever you are reading to anything, suppose tomorrow you will read sir डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 2.8 है, ये किसका मतलब? एयर के साथ कंपेयर हो रहा है. ये सब स्टैंडर्ड है. रिलेटिव का कभी भी डेटा नहीं मिलेगा आपको. रिलेटिव इज ऑलवेज योर स्टडी. यू विल नेवर गेट अ डेटा फॉर रिलेटिव, यू विल ऑलवेज गेट द डेटा फॉर एक्चुअल. So this is known as absolute refractive index. तो हमारे यहाँ पे क्या बोलेगा? That when I'm coming here, this 1 minute, this constant is known as refractive index of that medium, and we will add a line when light enters from air to the medium. भाषा क्या हो गया है? लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलने की भाषा हो गई है. बेसिकली लोग जो मीन कर रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन कर रहे हैं. तो लोग आपको बोलेंगे 1 minute साहब, I'll take your question. The refractive index of glycerin is say 1.9. तो आप जान लेना ये डेटा कैसे मिला? ग्लिसरीन और एयर को स्टडी करके मिला. The refractive index of close-up gelatinous toothpaste is say 2.8. ये डेटा कैसे मिला? क्लोजअप और एयर को कंपेयर करके मिला. और अगर दूसरे साइड का डेटा कोई बोलेगा तो लोग बोल देगा the relative refractive index of close-up with respect to alcohol is so and so, because close-up will behave different with respect to alcohol, will behave different with respect to glycerin, will behave different with respect to glass and blah blah blah. समझ में आया? सो एक लाइन में लिखूं, मैं अभी फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए. साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर will be always a constant, and you call this constant as refractive index. Whenever this is such, in your mind you start thinking that they are actually mentioning to what? They are mentioning to absolute refractive index of that medium. तो सर दो मीडियम क्यों नहीं बोला? Of that medium when light enters from air to the medium. इसका मतलब ऐसे केस में अगर आप पेयर को स्टडी करो तो पेयर कैसा था? पेयर बेटा था एयर, उसके बाद था इंटरफेस, उसके बाद था मीडियम. लाइट किस दिशा से आई सर? लाइट हमेशा एयर की दिशा से आएगी, एयर की दिशा से आएगी.
और मीडियम में टुवर्ड्स और अवे, बट अवे हो ही नहीं सकता क्योंकि एयर में सबसे ज्यादा स्पीड है, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। बताओ ये कहानी समझ में आया है कि नहीं? अगर नहीं आया फिर से बताऊंगा, पर क्लियर हो जाओ। Sin I by sin R is called the refractive index of that medium only when light is entering from air to that medium. And this sort of refractive index is known as absolute refractive index. So when we compare somebody, so let me compare your richness and my richness. Then let us fix up the poverty line is the benchmark. That's the benchmark standard. Now let's see how far you are away from poverty line. Then that is your richness. If I am less far away, I am less rich than you. You are more richer than me. तो डायग्राम को कुछ ऐसा समझे, कुछ ऐसा समझते हैं। देख लो, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। मान लो पॉवर्टी लाइन के साथ हम कुछ प्लॉट्स करते हैं। ये साहिब का प्लॉट है, ये मान लो मेरा प्लॉट है, ठीक है ना। इसको मान लो ये दर्शिका का प्लॉट बना दो, ये दर्शिका का प्लॉट है, ठीक है। और इसको मान लो ये आर्यमन का प्लॉट है ऐसे, और मान लो ये किसी और का प्लॉट, ये इसका, और ये जानवी का प्लॉट है। और ये क्या है बेटा? ये पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। क्या मैं पॉवर्टी लाइन से रिच हूं? बिल्कुल हूं। क्या साहिब रिच है? क्या दर्शिका रिच है? क्या आर्यमान रिच है? क्या जानवी रिच है? वो तो सबसे ज्यादा रिच है। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करो तो, साहिब और जानवी को, देन दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिचनेस ऑफ जानवी एज कंपेयर टू साहिब। समझ में आ रहा है? This is Janvi's absolute richness. This is Sahib's absolute richness. This is a data of comparison only between Janvi and Sahib. इस डेटा को लेके हम कोई भी डेटा यहां नहीं पुल कर सकते। मान लो हमें जानवी और इसके बीच में डेटा चाहिए, किसके बीच में? दर्शिका के बीच में डेटा चाहिए। This data is of no help to us. No help to us. It will help us if we have this data. ओ, जानवी पॉवर्टी लाइन से इतना है, दर्शिका पॉवर्टी लाइन से इतना है, तो दर्शिका जानवी का फिर रिलेटिव हम निकाल सकते हैं। गॉट इट? इसको और एग्जांपल लेना है, इसको यूएस डॉलर ले लो, इसको इंडियन रुपी ले लो INR, इसको पाकिस्तानी रुपी ले लो PKR, इसको क्या ले लो? इसको बांग्लादेशी टाका ले लो, टाका बांग्लादेश, इसको थाई बात ले लो। सबका बिटवीन थाई बात एंड इंडियन रुपी देयर इज अ रिलेटिव वीकनेस और स्ट्रेंथ, बट व्हेन कंपेयर टू द डॉलर देन दैट इज एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। समझ में आया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, कभी कभी घुमा देते हैं, पहले बहुत घुमाता था यहाँ से। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। सो एंड रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक नोटेशन है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको ज्यादातर किताबों में थोड़ी देर बाद RI करके ही बोलेगा, रिलेटिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज डिनोटेड बाय द लेटर ईटा। इसको हम ईटा बोलते हैं। ईटा कैसे लिखते हैं? N की तरह लिख के बड़ा कर दो, N की तरह लिख के बड़ा कर दो, दिस इज ईटा। तो हमारा डेफिनेशन क्या हो गया? ईटा इज इक्वल टू साइन ऑफ I ओवर साइन ऑफ R। And remember, for I, it is always air going to medium. मतलब एयर ऊपर रहेगा, मीडियम नीचे रहेगा, ठीक है। तो इसको लिखने का एक तरीका है, और इसमें एक देसी सिस्टम सिखाऊंगा, वही याद रखिएगा। तो देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। बेटा ऊपर कौन है? ऊपर एयर है ना, जो ऊपर रहता है उसको रेस्पेक्ट दिया करो। इसको कैसे हम पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ऐसा सिनारियो अगर आ जाए तो ये तो कुछ और नहीं, ये एब्सोल्यूट RI की बात कर रहा है। और एब्सोल्यूट RI जब हम लिखते हैं, ये जो है ना, इसको मन मन में आप गॉड मान लो, गॉड है, ये भगवान है, ये आपका गॉड है। तो इसको जब ऐसा हो जाता है तो हम सिर्फ यहाँ पे मीडियम लिखते हैं, गॉड को और लिखते नहीं है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड ऑन टॉप मींस गॉड के साथ ही कंपेयर हो रहा है। हैव यू अंडरस्टूड?
इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हम केरोसिन से घुस रहे हैं, किसमें, ग्लास में घुस रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे ईटा ऑफ ग्लास, ऊपर कौन है, केरोसिन, विथ रेस्पेक्ट टू केरोसिन। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू केरोसिन। ठीक है ना। लेकिन ये तो एयर नहीं है, ये किसकी बात कर रहा है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। अब लेकिन हम ऊपर गॉड नहीं है ना, अब हम हमेशा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको मुंडी का बात लिखना है, माथे का चीज लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप गॉड के साथ बात नहीं कर रहे हो, आप किसी साधारण आदमी के साथ कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि गॉड नहीं लिखते हैं। और अगर आप किसी दुकान में जाके या कोई डेटा शीट इंटरनेट में देख रहे हो, वहां आपको रिलेटिव डेटा कभी नहीं मिलेगा। वहां आपको जो डेटा मिलेगा दैट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट 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 एब्सोल्यूट। इसलिए वो लोग ऐसे लिखेगा, देखिए वो लोग लिखेगा ऐसे, देखिए चार्ट देखोगे तो चार्ट ऐसे आएगा, मटेरियल, और यहाँ पे लिखेगा ग्लास, क्या लिखेगा, आर आई। आर आई कैसे लिखेगा, ईटा ग्लास इज इक्वल टू सम वैल्यू। ईटा ग्लास मैंने समझ लेना, ये एयर के साथ कंपेयर हो रहा है, ये इसका एब्सोल्यूट है, राइट। सो हैव यू अंडरस्टूड ईटा ग्लास एंड ईटा दिस थिंग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे बोलता क्या है, व्हाट डज आर आई टेल ऑल अबाउट, आर आई बोलता क्या है। let's say eta glass is equal to 1.8. just imagine, I don't know what is eta glass is around 1.3 है glass का, या what 1. let's say 1.3 है। ये फिगर आपको अगर किसी ने दे दिया तो what is the significance of it, इससे क्या समझेंगे, इससे ये समझते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहां है बेटा, एयर में ही है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 1.3 times speed of light in glass, ये बताता है। और कैसे देखोगे इसे, when light enters from air to glass it gets slowed down by 1.3 by a factor of 1 by 1.3। ठीक है, तो कुछ ऐसे लिख लें अभी, देखो देखो देखो, ऐसे लिखो, देखो ईटा ग्लास with respect to air say is equal to 1.3, say I'm saying say, then it should be equal to how will we now, speed of light in air by speed of light in glass। c हमेशा c denotes speed of light in air। अगर आप ये कन्वर्शन समझ गए तो आपने चैप्टर समझ लिया। यानी कि c की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये करके देख लो, भूलने का कोई चांस ही नहीं है, ऐसे पढ़ा करो, 1.3 टाइम्स v ऑफ ग्लास। आगे c से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ये इजी है बट वेरी कंफ्यूजिंग है, इजी है बट वेरी कंफ्यूजिंग है। अच्छा, यही डेटा को जरा रिलेटिव के टर्म्स में देखते हैं, रिलेटिव के टर्म्स में। स्पीड ऑफ लाइट इन से केरोसिन डिवाइडेड बोल रहा हूं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास विल बी सम फिगर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस फिगर, रिलेटिव, दिस शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन over speed of light in glass. So this helps you get an equation that between kerosene and glass you will always find V kerosene will be equal to some figure, I don't know what it is, into V glass. आप ये मत कंक्लूड कर देना कि केरोसिन में स्पीड ज्यादा है। अगर ये फिगर लेस देन 1 है यानी कि फ्रैक्शन में है तो केरोसिन में स्पीड कम आएगा। समझ में आ रहा है ना, यार गेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ मैथ। ये देखो, ये फिगर अगर 1.3 है तो ये 1.3 बढ़ जाएगा, वो तो बढ़िया बात है सर। लेकिन ये फिगर अगर 0.8 है तो ये घट गया 0.8 टाइम्स ऑफ दैट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? ठीक है, इससे ज्यादा जाने से आप गड़बड़ा जाएंगे।
So you learned the second law में आज क्या क्या पढ़ा, but you should know what is relative refractive index, what is absolute refractive index, and how is the sin I by sin R को हम refractive index तभी बोलते हैं अगर इंसिडेंट मीडियम एयर है, अगर नहीं है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब इफ समबडी सेज RI means absolute and that's always constant, that doesn't change. You can take that as a standard because you're comparing with air. And all the data in problem, wherever they say the refractive index of glass, you please imagine it is eta glass with respect to air. ऊपर में जो मीडियम रहता है उसे रेस्पेक्ट दिया करो, उसको ऊपर लिखते हैं. जब प्रॉब्लम्स करेंगे अपने आप क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. We will now see the data of relative refractive index with respect to velocity of in medium. Already we have seen that. थोड़ा और उसको पढ़ेंगे. And then we are good to go. After that, we are straight away into lenses. Again, we will see placed in front of the lens, beyond the center of curvature. वो वाला story फिर से आएगा. But however, this time we will be studying convex lens in detail, not concave. Mirror में concave पढ़ते हैं, lens में convex को पढ़ते हैं. Righto. So we take a break today and we will continue with this story in our next class. Until then, please enjoy.